So today we will start with the chapter leaf. It is a part of the morphology of flowering plants. So different kinds of leaves are present. The normal leaves which you see on the branches, that is called as the foliage leaves. So now we'll study different kinds of leaves. So number one is foliage. Foliage leaves are the normal photosynthetic leaves. Foliage leaves are normal photosynthetic leaves. Some leaves are known as floral leaves. So all of you know about the parts of the flower, that is the calyx or sepals, petals, stamens and carpels. So flower is a modified shoot, that means a modified branch. So जैसे branch में leaves होता है ना, वो अगर branch modify हो जाएगा और flower में convert हो जाएगा, तो leaves of flower का part बन जाएगा. So flower का जो हिस्सा है और the parts है, like sepals, petals, stamens and carpels, so those are known as floral leaves. So parts of flowers. So that is known as modified. That is called as modified leaves. So among the floral leaves, some part of the flowers are called as sporophylls. So sporophylls are known as stamens and carpels. Stamens called as microsporophylls and carpels called as macro or megasporophylls. So that means the floral leaves, sepals, petals, stamens and carpels, all are known as floral leaves. But among the four parts of the flower, that is called as floral leaves, two parts are called as sporophylls. The male part are known as stamens, that is a kind of sporophyll known as microsporophylls, and the carpels known as megasporophylls. So that will give microspores and megaspores respectively. So floral leaves are also a kind of leaves. Another is, number 3 is the bract leaves. So bracts are the structures found below the flower stalk. Number 3 are the bract leaves. So bracts are also a kind of leaves that is present below the flowers. And the bract leaves are known as hypsophylls. Hypsophylls. They are very small, green color structure, that is present at the base of the pedicel. So small, green at the base of pedicel. You know that pedicel? Pedicel is the stalk of the flower. Stalk of the flower is known as pedicel. Suppose this is a stem and here is a node. So this is a flower. So at the base of, so this one is known as the pedicel. The stalk of the flower is known as pedicel. At the base there is small green color structures found. Small green color structures found, that is known as the bract or bract leaves, or it is also called as hypsophylls.
Another type of leaves are known as cotyledonary leaves. All of you know about the cotyledon, is a part of embryo. So that is also modified leaf. This is the first leaf of the plant. That is called as cotyledonary leaves. इसका मतलब है जो एम्ब्रियो की जो कॉटिलेडन है, that also known as the first leaf of the plant, but that is a part of embryo present inside the seed. So that's why that is the first leaf of the plant. So it is cotyledon. Cotyledon or cotyledons. In monocot there is single cotyledon. In dicot there is two cotyledon, double cotyledon. So cotyledon or cotyledons of embryo. That is known as the cotyledonary leaves. So there are different kinds of leaves are present. Another leaves are also present, scale leaves or the cataphyls. Scale leaves are known as cataphyls. तो scale leaves and cataphyls क्या है? Scale leaves are always called as caterpillar. You have already studied the modification of the stem. जैसे कि ट्यूब और राइजोम आपने स्टडी किए हैं. आप वहां पर देखे होंगे जो मॉडिफाइड स्टेम है, जो अंडरग्राउंड में है, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, उसके नोड में कुछ लीव्स है जो स्केल टाइप है, जो कि एक्सिलरी बर्ड को प्रोटेक्शन देती है. सो दोज आर नोन एज स्केल लीव्स. दे आर very much reduced, thin and scale like. Reduced, thin and scale like. और इसका मेन फंक्शन क्या है? It provides the protection to the axillary bud. And ये कहां पर है? Present in modified underground stem. जैसे कि ट्यूबर है, राइजोम है, कॉर्म है. सो इनमें सब कैटापिल्स होगी. दैट इज नोन एज स्केल लीव्स. So now we'll study in this chapter. So we are going to study the about the foliage leaves. The normal leaves जो प्लांट में होता है, जो फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन स्ट्रक्चर है, that is called as the foliage leaf. In this chapter we are going to study only the foliage leaves, the foliage part of leaf. These are the also leaves, modified leaves, but as the chapter is concerned, we are only dealing with the foliage leaves. सो लीव्स क्या है एक्चुअली, उसका अगर आप इंट्रोडक्शन देखेंगे, आप एनसीईआरटी बुक फॉलो कीजिए, 69 नंबर पेज. इज ए लैटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर. सो अगर हम एनसीईआरटी वाला पॉइंट्स देखेंगे, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू द फोलियस लीव्स, तो नॉर्मल लीफ होता है. सो लीफ
is a flattened structure, lateral structure borne on the stem. Leaf is lateral and generally flattened structure. Borne on stem. Lateral and generally flattened. So generally flattened मतलब क्या? Mostly flattened. ये जनरल वर्ड को आप मार्क कीजिएगा. सो इसे भी बहुत सारे लीफ है जो कि सर्कुलर टाइप का है, सिलिंड्रिकल टाइप का है. बहुत सारे लीव्स के मॉडिफाइड भी है, जैसे कि टीचर प्लांट में लीफ टीचर टाइप का यानी कि एक कंटेनर टाइप का मॉडिफाइड है. लेकिन जो जनरली जो स्ट्रक्चर है लीफ का वो फ्लैट टाइप का स्ट्रक्चर है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो. लीफ इज फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, लैटरल स्ट्रक्चर, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर एंड लीव्स आर बोर्न ऑन द स्टेम. तो कहां पर लीफ जो बोर्न हुआ है स्टेम के कहां पर, सपोज आप देख लीजिएगा ये स्टेम है, ऑलरेडी आई हैव ड्रॉन यू इन द प्रीवियस क्लासेस. इन स्टेम का नोड से इज द ग्राउंड. ओके, सो यहां पर अगर एक लीफ होता है, so these are the node regions from where the leaf develops. Leaves are generally born on the node region. So as I told you in the earlier classes, this space is known as, ये जो space है ना, this space is known as axil of leaf. और इस space में जो bud होगा ना, this bud is known as axillary bud. तो एक्सिल में बॉड होता है इसलिए इसका कारण इसका नाम है एक्सिलरी बॉड एंड नोट. दिस इज नोट. सो जनरली लीफ जो बॉर्न होता है दैट इज नोट ऑफ द स्टेम. ओके, लीफ डेवलप्स एट द नोट. सो लीफ डेवलप्स एट द नोट एंड bears a bud that is called axillary bud. Here's a bud means axil. Okay, bears a bud in its axil, or this is called axillary bud. As per its position, the bud is present in the axil, that's why it is called as axillary bud with related to its position. And this axillary bud that later on gives a new branch. यहाँ से branch, नया branch develop होगा, एक नई शाखा develop होगी. ठीक है? So this axillary bud that gives a new branch. Okay? So develops into a branch. तो ये जो लीफ का डेवलप हुआ है, अगर हम इसका एनाटॉमी के साथ थोड़ा रिलेट करेंगे, आपको मालूम है कि जब एक स्टेम ग्रो करता है इन लेंथ, उसका टिप में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है. द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर नोन एज द डिवाइडिंग टिश्यू, एक्टिवली डिवाइडिंग एंड यंग टिश्यू, जो कि हमेशा एक्टिव सेल डिवीजन में रहता है. दोस टिश्यूज आर रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीजिंग इन द लेंथ. सो दैट मेरिस्टेम एट द शूट टिप और स्टेम टिप इज नोन एज शूट एपिकल मेरिस्टेम. जब शूट एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड होकर शूट एलोकेट होते हुए जाएगा, उसी समय में कुछ शूट एपिकल मेरिस्टेम और नोड के रीजन में रहेंगे, वहीं से लीफ डेवलप होगा. इसका मतलब है लीफ का जो ओरिजिन हुआ है दैट इज फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम. सो यू कैन राइट द नेक्स्ट पॉइंट. जस्ट हैव द टच विद द एनसीईआरटी पेज नंबर 69. Leaves originate from shoot apical meristem. From shoot apical meristem, or shortly it is known as SAM, shoot apical meristem or SAM. जो लीफ का ओरिजिन हुआ है
वो main stem artificial and that is pseudoapical main stem. Leaves arranged in acropetal order. Leaves arranged in acropetal order. So what do you mean by this acropetal order? इसका मतलब है older leaves below and younger leaves above. Older leaves below and younger leaves above. जैसे एक ब्रांच हो या स्टेम हो, जैसे वो ग्रो करते जाएगा तो नया लीव्स ऊपर की तरफ रहेगा और पुराना लीव्स नीचे की तरफ रहेगा. So that is known as acropetal manner, arranged in acropetal manner, या इसको हम बोल सकते हैं acropetal order या acropetal succession. देखिए सपोज एक स्टेम है, ग्राउंड है, ये सब नोड्स है, ये स्टेम अपवर्ड को ग्रो करेगा. सो जो लीव्स होगा, बड़ा बड़ा लीव्स होगा ऊपर की तरफ रहेगा और छोटा लीव्स जो अभी बना है वो बड़ा बड़ा जो लीव्स है वो नीचे की तरफ रहेगा. जो अभी बना है लीव्स, जैसे स्टेम ग्रो होते हुए जाएगा नए लीव्स कम होते हुए जाएंगे. तो इसका मतलब पुराने जो लीव्स है, ओल्डर लीव्स जिसका साइज बड़ा होगा वो नीचे की तरफ रहेगा और जो यंगर लीव्स है वो ऊपर की तरफ रहेगा. दिस अरेंजमेंट इज नोन एज acropetal order, या इसको बोलते हैं acropetal succession. Okay. So leaves का main function क्या है? The main function of the leaf is photosynthesis. और उसका दूसरा function है that is known as transpiration. तो transpiration से क्या होता है? वो loss करता है water from the plant or from the leaf to the aerial part to the atmosphere. So इसके कारण क्या होता है? इसके कारण cooling down effect होता है. टेम्परेचर रेगुलेट होती है. ओके, सो व्हाट मेन फंक्शन ऑफ द लीफ इज फोटोसिंथेसिस. सो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द लीफ इज फोटोसिंथेसिस. सो लीव्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट vegetative organs. You know that in plants there are two kinds of organs present: vegetative organs and reproductive organs. Vegetative organs are root, stem, leaf, flower, fruit. Root, stem, leaf are the vegetative organs. Flowers are the reproductive organs. So leaves are most important vegetative organs. Leaves are most important vegetative organs for photosynthesis. Except flower, all the organs of the plant are known as vegetative organs. Only flowers are reproductive organs. Now go to the parts of the leaves. Parts of leaves. So three parts are there. Leaves का तीन पार्ट है. Number 1 base, number 2 petiole, number 3
lamina, या इसको बोलते हैं blade, leaf lamina or leaf blade. So these three parts are having alternate names. The base is known as hypopodium. Base is known as hypopodium. Alternate terminology is there. Hypopodium. Petiole is known as mesopodium. And lamina is known as epipodium. Base, petiole and lamina. And leaf is attached to the stem by the leaf base. So you can follow the diagram of the leaf at the page number 70. This diagram has been given. So here is the stem. So this point, at this point, leaf is attached to the node of the stem. So this point is known as base. And the stalk of the leaf is known as petiole. And the expanded structure, green structure of the leaf known as lamina. At the base of the leaf, two lateral small outgrowths are present, may be present. In some leaves, these outgrowths may be present, and in some leaves, these outgrowths may not be present. And these two outgrowths are known as stipules. So you can follow the diagram of page number 70. The two outgrowths known as stipules. There is the labeling given: leaf base, stipules, petiole, lamina, and there is also presence of axillary bud. There is also presence, you can follow the diagram, presence of the axillary buds. There is also presence of, in the axil, there is a presence of this bud known as axillary bud. It may be one or two, because two axillaries are present, either this side or that side. Maybe one or two axillary bud or buds may be present. So base क्या है? Base is the part of the leaf which is attached to the node. Okay? So leaf is attached to the stem. स्टेम मतलब कहां पर अटैच होता है? नोड में अटैच होता है. स्टेम की नोड में अटैच होती है. ठीक है? दिस वन इज नोड. दिस वन इज नोड. स्टेम नोड. सो लीफ इज अटैच टू द स्टेम. मतलब स्टेम की नोड के साथ अटैच होती है बाय लीफ बेस. Okay? And the leaf base may bear two small lateral, दो साइड में लीफ बेस की दोनों साइड में छोटे छोटे दो स्मॉल लैटरल अपेंडेजेस है, जिसका नाम है स्टिप्यूल्स. दैट मे बी प्रेजेंट, मे नॉट बी प्रेजेंट.
leaf base may bear two small lateral leaf-like structures. ये भी लीफ जैसा है, ये भी ग्रीन कलर है, ये जो स्टिप्यूल्स है ना, ये भी ग्रीन कलर है. सो लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन लीफ जैसा इतना बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन ग्रीन स्ट्रक्चर. कॉल्ड स्टिप्यूल्स. इसका नाम स्टिप्यूल्स है, लेकिन यहां पर वर्ड है मे बियर. इसका मतलब है ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होता है. कुछ लीफ में प्रेजेंट है, कुछ लीफ में प्रेजेंट नहीं है. अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट है, इफ स्टिप्यूल्स प्रेजेंट, then that leaf is known as stipulate leaves. Stipulate leaf. अगर स्टिप्यूल नहीं होगा, इफ लीफ बेस में स्टिप्यूल नहीं होगा, stipules absent, in that case that leaves are known as exstipulate. ये टर्म एक्चुअली यूज हुआ है stipulate leaf and exstipulate leaf. If stipules present, then leaf को बोलते हैं stipulate leaf. If stipules absent, then that leaf is called exstipulate leaf. और लीफ बेस का यहां पर दो टाइप का मॉडिफिकेशन हुआ है. एक है पल्विनस, दूसरा है सीडिंग लीफ बेस. सो मोनोकॉट में सीडिंग लीफ बेस दिखाई देता है. So एक important point है, in monocot plants leaf base is expanded a little. leaf base थोड़ा सा expand हुआ है और एक sheath like covering किया है. leaf base expands into a sheath and cover the stem partially or fully. Which covers the stem partially or wholly, and this is called as seeding leaf base. ये इस टाइप का seeding leaf base you can find it in the monocot plants like the rice, maize. देखिए सपोज मान लीजिए एक स्टेम है, जिस डायग्राम देख लीजिएगा. तो यहां पर क्या है, जो लीफ बेस एक पॉइंट होना चाहिए. लीफ बेस एक्चुअली एक पॉइंट होता है जहां से ऐसे लीफ निकलता है. तो ये एक्चुअली लीफ बेस है, पॉइंट है. लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर ये लीफ बेस चौड़ी हो जाएगी, इसे चौड़ी हो जाएगी और ये कवर करेगी स्टेम को, इधर पार्शियली कवर करेगी. ये लीफ बेस एक्सपैंड हो गया है. लीफ बेस एक्सपैंडेड एंड द कवर द स्टेम अप टू सम हाइट. ये इसे इसका डायग्राम और थोड़ा हम चेंज कर सकते हैं. ग्रासेस में भी यू कैन फाइंड इट इन द ग्रासेस. ये लीफ बेस यहां से इसे एक्सपैंड करेगा. एक्सपैंड करने के बाद ही उसके बाद वो लामिना फॉर्मेशन करेगा, ऐसे थोड़ी देर एक्सपैंड करेगा. सो दैट इज नोन एज सीडिंग लीफ बेस. और एक मॉडिफिकेशन क्या है, हम अभी लीफ बेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं.
about the some important points related to leaf bases. एक तो हो गया मोनोकोट प्लांट में सीडिंग लीफ बेस, दूसरा है लेग्यूम प्लांट्स में जैसे पी, बीन्स, ग्राम, ये सब लेगुमिनोसी फैमिली लेग्यूम प्लांट्स, लेकिन सब में नहीं, कुछ लेग्यूम प्लांट्स में, इन सम लेग्यूम प्लांट्स, in some leguminous plants, leaf base is swollen, called polvinous leaf base. In some legume plants, leaf base become swollen, called, इसका नाम है polvinous. Polvinous leaf base. लेग्यूम प्लांट्स का मतलब ये है लेगुमिनोसी फैमिली और फैबासी फैमिली, इसकी पी फैमिली इसको बोलते हैं, पी, बीन, ग्राम, ये सब प्लांट में लीफ बेस स्वोलन होती है, दैट्स कॉल्ड पॉल्विनस. लीफ बेस अगर पॉल्विनस होगा, अगर स्वोलन होगा, दैट लीफ इज नोन एज पॉल्विनेट लीफ. Leaf is called polvinate. लीफ बेस को बोलते हैं पॉल्विनस, अगर पॉल्विनस होगा तो लीफ को बोलेंगे पॉल्विनेट लीफ. तो देखिए इसकी डायग्राम कैसा है, ये नोड है, तो यहां पर लीफ बेस से स्वोलन होगा, ये स्वोलन होके उसके बाद ये पिट्यूल है और ये लैमिना. तो दिस इज swollen leaf base, ये leaf base swollen हुआ है, ठीक है, इस कॉल्ड पॉल्विनस. तो दो टाइप का लीफ बेस में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मालूम चला, एक है सीडिंग लीफ बेस जो कि मोनोकोट प्लांट में होती है, और एक है पॉल्विनस लीफ बेस जो कि कुछ लेग्यूम प्लांट में होती है, इन सम लेग्यूम प्लांट्स. ओके, उसके बाद है नेक्स्ट विल गो टू पिट्यूल. So petiole is the stalk of the leaf. लेकिन सारे लीफ का पिट्यूल नहीं होता है, कुछ लीफ का पिट्यूल लेस भी होती है, उनमें पिट्यूल नहीं होता है. ओके, स्टार्ट विद द पिट्यूल. That is called as the stalk of the leaf. If petiole present, अगर लीफ में पिट्यूल होता है, then leaf is called petiolate. अगर पिट्यूल होगा तो लीफ को बोलेंगे पिट्यूलेट लीफ, that is called petiolate. अगर पिट्यूल एब्सेंट है, if petiole absent, then called as sessile leaf. Sessile. अगर पिट्यूल होगा तो लीफ को बोलेंगे पिट्यूलेट लीफ, अगर पिट्यूल एब्सेंट होगा then it is called sessile leaf. देखिए सपोज एक स्टेम है, ये नोड है, ये पिट्यूल है, this is the leaf, this is petiole. लेकिन आप दूसरा स्टेम भी देख सकते हैं, यहाँ पर
no petiole is present. Direct lamina is attached to the node. So this one is known as sessile leaves, stalk-less leaves known as sessile leaves. And the petiole leaves having petiole is known as petiolate leaves. तो petiole का क्या फंक्शन है? तो इसका हम कुछ एग्जाम्पल देंगे sessile leaf का. जिसे sessile leaf का एग्जाम्पल क्या है आप देख सकते हैं. वीट प्लांट में है, जो गेहूं का प्लांट होता है, वीट, राइस जो पैडी प्लांट होता है, और एक है कैलोट्रोपिस. कैलोट्रोपिस साइंटिफिक नेम है, इसका इंग्लिश नेम है मडार प्लांट, जिसको ओडिया में बोलते हैं अराखा. अराखा. So wheat, you know that, triticum aestivum, rice is Oryza sativa, and calotropis is madar. So calotropis में भी sessile leaves है. Okay? So petiole क्या करता है? वो लीफ ब्लेड को लाइट की तरफ एक्सटेंड करता है और लीफ ब्लेड को फ्लटर करता है विंड में. देखिए ये petiole जो स्टॉक है ना, अगर स्टॉक रहेगा तो लीफ थोड़ा ऊंचाई में रहेगा, तो उसको लाइट अच्छे से उसको लाइट अच्छे से मिलेगा. तो वो एक्सपोज करता है petiole लीफ लैमिना या ब्लेड इसको बोलते हैं, इसको एक्सपोज करता है टुवर्ड्स द लाइट. एंड जैसे ब्लो होता है ना, विंड ब्लो होता है, जब चलता है ना, हवा चलती है, तो ये फ्लटर होता है. तो फ्लटर होता है in the wind, so that in the air it flutters, so that it actually removes the bad air or the moisture around the leaf lamina and brings the fresh air. Okay, so these are the NCERT points. Page number 70. You can follow. Petiole help to hold the leaf blade to light. Petiole hold the leaf blade to light. Another function of the petiole is flutters the leaf lamina or blade in the air. NCERT line है, long, thin, flexible. You can follow the page number 70. Long, thin, flexible petiole cause leaf blades to flutter in wind. Cause the leaf blade मतलब लैमिना, ये जो सरफेस वाइड सरफेस है ना, इसको बोलते हैं लैमिना या ब्लेड. तो लीफ ब्लेड टू फ्लटर इन विंड. जब हवा चलती है तो लीफ ब्लेड जो हिलता है उसको बोलते हैं फ्लटरिंग. वो फ्लटर होता है, ठीक है ना, विंड में फ्लटर होता है. तो इसके कारण क्या हेल्प होता है? कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस. ये फ्लटरिंग के काम क्या होता है? कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर अराउंड द लैमिना. So cooling the leaf and bringing fresh air to leaf surface. Okay.
यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम देंगे जो कि इनिशिएटिव में नहीं है। पिट्यूल का कुछ मॉडिफिकेशन भी है कुछ प्लान में, जैसे कि टेंड्रिलर पिट्यूल एंड द बल्बस पिट्यूल। अगर पिट्यूल टेंड्रिल, ऑल ऑफ यू नो दैट टेंड्रिल, जैसे एक्सिलरी बॉड आपने स्टेम में स्टडी किए थे, एक्सिलरी बॉड मॉडिफाइड ए स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड टेंड्रिल। यहाँ पर जो पिट्यूल है, ये जो पिट्यूल है ये अगर एक स्प्रिंग टाइप का हो जाएगा स्ट्रक्चर, लैमिना जैसा है वैसा रहेगा, लेकिन दिस पिट्यूल इंस्टेड ऑफ ए स्टॉक इट विल बिकम ए स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड टेंड्रिलर पिट्यूल। अगर मान लो कि ये पिट्यूल स्वेलिंग हो जाएगा, स्पंजी हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड बल्बस पिट्यूल। So we are studying about the petiole. So in petiole there are some modifications, as I told you just now. The modifications like the petiole is the bulbous petiole or the tendrilar petiole. So we'll go to the modifications of the petiole. So different kinds of modifications are present in the petiole. Different kinds of modifications are found in the petiole. So modifications of petiole. So first modification is winged modifications, winged petiole. The petiole become wing-like structure. So petiole is the stalk of the leaf, and various types of modifications are there in the petiole to perform some extra functions. So first is the wing petiole. So petiole becomes wing-like structure, becomes flat and wing-like structure. So example is citrus or lemon or orange. In citrus plant or in lemon and orange plant, petiole becomes flat and wing-like structure and also photosynthetic. Petiole also become green and photosynthetic. So like this you can study here. This is the petiole and this is the lamina. This petiole, instead of stalk, it is winged petiole. Instead of stalk, it appears as green, flat and wing-like photosynthetic structure. Example is lemon and orange. After that, tendrilar petiole. Number 2 is tendrilar petiole. So petiole becomes spring-like tendrilar structure. All of you know that the spirally coiled spring-like structures are known as tendril. So here petiole becomes spring-like spirally coiled structure that becomes tendril, or it is called tendrilar structure. And the example here is Nepenthes. Nepenthes is the pitcher plant. All of you know about the pitcher plant.
It is the insectivorous plant. It traps the insect. Its leaves are modified to pitcher. Just look at the diagram here. So these modifications you can follow in the page number 71 of NCERT. Okay? Page number 71, there is a heading, modifications of leaves. Okay? So वहाँ पर टेंडर दिया है, स्पाइन्स दिया है, ठीक है, और एक एग्जाम्पल दिया है, ऑस्ट्रेलियन अकासिया दिया है. Leaves are small and short-leaved, petioles expand to become green and synthesize with food. So we'll later on study these things. So first we'll go to the tendrilar petiole. Petiole modified to tendril. So another example we can write here. This is the one example, Nepenthes. Another is clematis. In clematis plant also, pitcher, like the pitcher plant, clematis, in clematis, the tendrilar petiole are present. So you just look here. This is the stem. This is the node region. This container is called petiole. You just look here. Suppose this is a plant, normal plant, and this is the leaf. This one is base, you know that? Base. This one is petiole. And this is lamina. And this is leaf apex. So, here, this one is base. You just look, the base is modified to a green flattened structure. This one is base. And as in the normal leaf, there is petiole. The stalk is called petiole. This is the stalk. That is called the petiole. The petiole becomes tendril, the spirally coiled or spring-like structure. That is tendril. So, this one is tendrilar petiole. And the lamina becomes wider and a container like a vessel. So this one is called as the pitcher. So this one is lamina. And the leaf apex becomes a lead. This one is leaf apex. So this one is known as lead. This one is pitcher. And this one is tendrilar petiole. And this one is base. So now you can study from this diagram how a normal leaf along with base, petiole, lamina, apex. This is the normal structure you can find in any plant. So, but in pitcher plant, this is modified to this type structure. So base is wider. Instead of a point, the base is wider. Instead of a stalk, the petiole become tendrilar. And instead of the green flat structure, it becomes a container-like structure, like it is called pitcher, and instead of apex, it becomes a lead. So this is the Nepenthes plant, or the scientific name is Nepenthes, and it is the pitcher plant. It is an insectivorous plant. So this is the example of tendrilar petiole. Next is bulbous petiole. So you can draw the diagram. So now we are studying the modification of petiole to perform different functions. So in case of the tendrilar petiole, it actually
keep the picture in the right position. That's why the tendrils are there. Okay. So in the third modification, it is called as bulbous petiole. Number 3, that is called bulbous or floating petiole. It is found in aquatic plant. Here the petiole become a bulb-like structure. It gives some floating. So petiole becomes spongy and filled with air. So petiole becomes spongy, filled with air and maintain buoyancy or help in floating. So this is found in aquatic plant like some weeds, that is Eichhornia, Trappa, and the examples here. The example is Eichhornia. The scientific name, English name is water hyacinth. Another example is Trappa. Trappa is known as water चेस्टनट. ट्रापा या वाटर चेस्टनट को उड़िया में बोलते हैं पानी सिंगोड़ा. पानी सिंगोड़ा. So its English name is water chestnut and scientific name is trappa. So all of you have might have seen the Eichhornia plant. Water hyacinth is an invasive weed, you know that. So its leaves are like this. This is the petiole. The leaves are like this. So you might have studied in case of the stem modification, subaerial modification step. You must recall it. There is one heading offset. उसमें भी एग्जाम्पल दिया गया था आइकॉर्निया का. ऑफसेट वो जो एक इंटरनोड स्पॉन्जी एंड फ्लेसी इंटरनोड था और टॉप ऑफ लीव्स एंड टॉप ऑफ रूट्स था. तो वहां पर ये जो you can this one is the petiole. This is petiole and this is lamina. And this petiole is spongy, or it is known as bulbous and floating petiole. It makes the plant floating on the water surface. So next example or next modification will go, that is phyllodes. In NCERT the phyllodes was what not given, but its meaning is given. So number 4 modification of the petiole. Number 4 is phyllodes. So you can follow the NCERT lining, page number 71, under the heading modification of leaves. So in the modification of leaves, you can see there is a sentence. In some plants such as Australian acacia, the leaves are small and short-lived. The petioles in these plants expand, become green and synthesize food. So in some plants, leaves मतलब उसका जो लामिना है, वही लीव से वो स्मॉल होता है एंड सून फॉल ऑफ और शॉर्ट लिव्ड होता है. लीव्स मतलब यहाँ पर क्या है, लामिना. और
short are small and short-lived and fall off earlier. So इसके केस में क्या होता है, अगर ये फॉल ऑफ हो जाएगा तो ये इसका जो पिट्यूल है, क्योंकि लैमिना फॉल ऑफ हो गया तो पिट्यूल एक्सपैंड और मॉडिफाइड टू एक्सपैंडेड लीफ लाइक स्ट्रक्चर. सो यहां पर पिट्यूल्स मॉडिफाइड टू expand green and photosynthetic structure, that is called phyllodes. So petiole modified to phyllodes. And what is this phyllodes? Green expand leaf like photosynthetic structure. Green expand leaf like photosynthetic structure. This one is called phyllodes. अब देखिए, सपोज इज ए प्लांट, इसका एग्जांपल क्या है? You can write the example here. Example is acacia melanogylon, or is known as Australian acacia. इसका पूरा नाम है acacia melanogylon, and common English name is Australian acacia. It has been written in NCERT. You can follow that. Australian acacia. Suppose this is the leaf, this is the stem, and it is having the compound leaves. So many leaves on a branch. Okay. These are lamina, short lamina, small lamina. So here, this is the petiole. When this lamina is fall off, then there is no structure for photosynthesis. Photosynthesis करने के लिए कोई structure नहीं होगा, क्योंकि ये लामिना बहुत जल्द fall off हो जाएगा, झड़ जाएगी जब बहुत जल्द. तो ये जो petiole है, it becomes expand green like structure. Like this, you can follow. This petiole become expand. This leaf fall off. ये leaves of fall off हो जाएगा. This leaf fall off. So this petiole become expanded structure, leaf-like structure, and this petiole becomes expanded structure, and this one is called as phyllodes. So this is another modification of petiole of leaf. So now we are studying the parts of the leaves. We have so far covered leaf base. Next we have just covered the petiole of leaf. Now we will go to leaf lamina or leaf blade. Now we go to leaf lamina. Lamina or the leaf blade. Okay. So you can follow the NCERT 70 number page number 70. In the first paragraph,
lamina or leaf blade. Lamina, or it is known as leaf blade. As you know, the lamina is the expanding part. This is the petiole, this is the base petiole, and this one is lamina. This is lamina. It is a green expanded structure of the leaf. It has veins, one prominent midrib is present, and many lateral veins and veinlets. This one is known as mid vein or midrib. And these are known as lateral veins. These are known as lateral veins. These veins help in conduction of water and minerals, because in these veins the vascular bundles are present. That means xylem and phloem are packed into bundles, and these are found in the veins, the main vein as well as in the lateral vein. Understood my point? So, what is lamina or leaf blade? It is green expanded part of leaf with veins and veinlets. Very fine veins are known as veinlets. क्योंकि देखिए ये जो मिड वेन होगा ये बहुत थिक होगा, उसके बाद जो साइड वेन है उससे जो ब्रांच निकलेगा वो उससे थिन होगा, उससे जो ब्रांच निकलेगा वो और थिन होगा, उससे जो ब्रांच निकलेगा वो फिर थिन होगा. तो इसे वो साइज और इसका थिकनेस with the branching it goes on decreasing. ठीक है? और the thickness of the vein is directly proportional to the size of the vascular bundle. इसका मतलब है जो बड़ा वेन है, मेन वेन है, उसमें बड़ा बड़ा vascular bundle होगा, यानी जाइलम फ्लोएम जो होगा वो बड़ा साइज का होगा, उसका जो लैटरल वेन है वो फिर उससे छोटा होगा, फिर जो और ब्रांच होगा उसमें भी छोटा होगा. That means the size of the vascular bundle present in the leaves is directly proportional to the size of the vein. So lamina is the green expanded part of the leaf with veins and veinlets. Okay? The middle prominent vein known as midrib are present. Midrib is present. And what is this midrib? जो मेन वेन होता है ना उसका बीच में उसको बोलते हैं midrib. ये midrib क्या है? ये लार्ज साइज का है, उसका थिकनेस बहुत बड़ा है. सो मिडिल प्रोमिनेंट वेन. सो मिडिल prominent vein is called midrib. ओके? और उसमें लैटरल वेन्स है. और जो वेन्स का क्या फंक्शन है? वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू द लीफ प्लेट. वेन्स का इसमें जो सारे वेन्स है ना, इसो वेन्स है, उस वेन्स का वो लीफ लैमिना को सपोर्ट देते हैं. जैसे कि हमारा बॉडी में स्केलेटल सपोर्ट है, उस तरह लीफ लैमिना में सपोर्ट देता है वेन्स, जो कि रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं लीफ सरफेस को या लैमिना को. सो वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड. वेन्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड लिख सकते हैं या फिर लीफ लैमिना भी लिख सकते हैं. लीफ ब्लेड और लीफ लैमिना. And veins also act as channels for transport of different substances. Also act as channels of transport of water, minerals and food materials. Also act as channels for transport of
water, minerals and food materials. So all of you know that xylem transport or conducts water and minerals, and food material is conducted by phloem. And xylem and phloem here are combined or compact to form a bundle that is known as vascular bundle. So vascular bundles are present in this midrib as well as the lateral veins. And as I told you, the size of the vascular bundle varies, and that is directly proportional to the size of the vein. So these create channels or act as the channels. So midrib हो या फिर lateral veins हो या venlets हो, this all has vascular bundles. Okay, so midrib and branched veins, and further branching known as venlets. So midrib, branched veins, that is known as lateral veins, and venlets, very fine veins are known. These all contain vascular bundles. Vascular bundles को शॉर्ट में हम लिख सकते हैं VBs, vascular bundles. And this create channels, जो कि यहाँ पर जो इंसेट का पॉइंट दिया गया, act as channels. That means these veins act as channels. इसका मतलब क्या है? Midrib हो, branch vein हो, mid vein है ना? So mid vein हो, branch vein हो, venlets हो, these all contain vascular bundles. That's why they create a channel for transport. So contain vascular bundles and create channels for transport. Create channels for transport. And the size उसका क्या करता है? Vary करता है. And size of the vascular bundles directly proportional to the size of veins. ये very important point है. Must note it down. Size of vascular bundles directly proportional to size of veins. इसका मतलब midrib में बड़ा साइज का vascular bundle होगा, उसका branch vein में उससे छोटा साइज का vascular bundle होगा, और venlets में सबसे छोटा vascular bundle होगा.